This film is extremely close to us, or it's a way of speaking about all the women, all the girls, जिनके जो मर्दानी का जो स्पिरिट है उसको जगाने के लिए. So हमारे अंदर एक शक्ति ऑलरेडी है, और वही शक्ति का एक तरीके से प्रदर्शन है इस फिल्म में कि अपने अंदर की मर्दानी जगाओ ताकि कोई इसका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले. तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ मैसेज. It was very interesting to play Shivani Shivaji Roy because she is inspector in crime branch. बहुत मज़ा आया इन लोगों से मिलकर जब मैंने रिसर्च की इस फिल्म के ऊपर, और बहुत सारे इंस्पेक्टर से मिली जो कि सब लेडी इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे बहुत इंस्पिरेशन भी ली. एंड ये फिल्म एक तरीका है कि हम पूरे देश को बताएं कि जो हमारे कंट्री में जो फीमेल ऑफिसर्स है, जो लेडी ऑफिसर्स है, उनका कितना योगदान है हमारे लाइफ में, जो हम ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मेन लुक अपॉन एज फीमेल ऑफिसर्स कि शायद ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, शायद ये मेल ऑफिसर्स की तरह नहीं होंगे. बट टू टेल यू द ट्रूथ, देर आर फीमेल ऑफिसर्स हु आर, आई वुड से, नॉट ओनली एज गुड एज द मेल ऑफिसर्स बट समटाइम्स इवन बेटर. So I think it's just the way we have to change the perspective of how people look at lady cops and lady police officers, and this film is probably one step towards that change. Actually, my experience was great because I did learn Krav Maga, which is an Israeli martial arts self-defense form. And through the process of learning Krav Maga, the instructors who are from Delhi, they in fact took me through an entire series of teaching me what are the different self-defense techniques that women can do in terms of the danger that they face on a day-to-day level. And Krav Maga emphasis on the fact that you don't have to be physically strong to protect yourself. And I was really, really actually intrigued with those things, and I actually learned some of the forms of self-defense. And hopefully I'll use them if I ever need to. So I think it's a great opportunity through this film that I learned another thing, because normally in every film I do go through extensive training of some other thing that I learn, and through Mardani I've learned this. So I really in fact enjoyed my action scenes.